variable name should not be start with any digit. So it is a memory location where you have to store the value, and variable value will changes throughout the program execution. That is a way to represent the memory location through the symbol so that it can be easily identified. Clear? Yes, sir. So when you give any variable name, it should not be start with any kind of predefined keyword. So don't give the variable name with the help of any keyword. Keyword should not be given. A data type specify the type of data that can be stored in a variable. So when you define a variable is a location where you have to store a value. Then you have to define the type, what type of data that you have to store in a variable. Sir. It may be integer type, floating point type, or character type. So in the C, there is 4 different data types are present. One is basic data type, which is predefined, derived data type, enumerate data type, and void data type. Okay, these 4 type of data type is present here. In basic data type, we have int, char, float, and double. It is a basic. Derived data type, जोटा कि primitive type रो जो माने आसीचंदी सेटा को जब primitive data type. Array, pointer, structure, union. So these are the primitive data type. Enumeration data type, like enum, এটা হচ্ছে enumeration data type. And void data type. Void is a return type which is defined while you are defining a function. If you are expecting any value that will return from the function, then in place of void we can include any kind of data type. माने आमे गोटे तला फंक्शन डिफाइन करिवा, यूजर डिफाइन फंक्शन हो किबा हमर मेन मेथड हो, यदि से मेथड आमे किछि वैल्यू रिटर्न पई एक्सपेक्ट करूचे, देन आमे यूज करिवा void. आ जदि किछि एक्सपेक्ट न करूचे, देन आमे अदर डाटा टाइप यूज करिवा. Then char data type. Char is store a 1 byte. Signed char is store 1 byte number. Sort will store the 2 byte. Okay. Bujhela? Yes, sir. Signed sort is 2 byte. Unsigned sort is 2 byte. INT is a 2 byte. Signed INT is 2 byte. Unsigned INT. So these are the different data types we are using. So normally what we are using? Normally we are using char, sort, INT, sort, INT. Okay, so these are the basic data type that we are using. I mean, normally in the programming language we are using it. Long INT, long value you can use. Then in float value, while you want to store a decimal value, then we are using float, double, long double. So these are the data type we are using. Yes, sir. Sir? Sir? Then keyword in the C. So what are the keywords are available in the C language? The keyword is a reserved word. You cannot use it as a variable name, constant name. So there are only 32 reserved words are present in the C language.
A list of 32 keyword in the C language is given below: auto, double, int, struct, break, else, long, switch, case, enum, register, type of, char, extern, return, union, constant, float, sort, unsigned, continue, for. So these are the different keywords are available. So when you give a variable name, the variable name should not be start with any kind of keyword. The variable name ta कौनसी keyword रो start हवन. Again, sir. Then literal are the data that is used for representing a fixed value. They can be used directly in the code. Literal means which is called as a constant value. Okay, means the value is when you want to make your value as a constant. In that case, we are using literal. An integer is a numeric literal value without any fractional or exponential part. Then example is 0, -9, 22, etc. Octal 21, 77, 33. Hexadecimal 0 into 7f, 0 into 2a, 0 into 5, 21, etc. These are the way of defining integer value. Floating point value केमती होगा ना, is a decimal value -2.0, 0.0. क्यारेक्टर हेले जदि सिंगल क्यारेक्टर में पास करछे एटा सिंगल कोटेशन में पास हो. सिंगल कोटेशन a, m, f2 एटा होची क्यारेक्टर वैल्यू. Sir, And string escape टा कोड रे sequence. जीवे. ओके, हमें जदि /t यूज करिवा एटा कोइ जीवा टैब स्पेस. /b हेले बैक स्पेस. ओके, तो एटा होची सिंगल लाइन कमेंट, डबल स्लैश, सिंगल लाइन कमेंट. कौन सी लाइन टाको जदि हमें कमेंट दवा ए सिंगल लाइन कमेंट यूज करिवा. एटा हबो नल कैरेक्टर यूज हो. String literal. A string literal is a sequence of character that is enclosed in the double quotation. The string ro literal by constant हमें पास करिवा सेटा डबल कोटेशन भीतर हमें पास करिवा. Then constant, if you want to define a variable whose value cannot be changed, you can use the constant keyword. Okay, if you want to make a variable as constant, then const keyword is used. So now I move to the next part. In C programming language, we're using printf and scanf. Okay, so printf it is used for display the data. We're using printf. For accepting the input from user, we're using scanf. Okay, so two things we're using. For the display the data, printf. For accepting the keyboard input, we're using scanf. Okay. Yes, stdio sir. is called stdio is called as a header file. So which is called as the preprocessor directive.
तो ऑलरेडी हमें डिस्कस करछे प्री प्रोसेसर डिटेक्टिव मीन्स बिफोर executing the program what are the tools and libraries required it will gather that सी gather करियो सी information how does this program work all valid C program must contain the main function every C program contain the main method though code execution begins in the main method. So every program is starts with the main method. Printf is a library function to be sent formatted output to the screen. To use printf in our program, we need to include stdio.h, which is called as the header file. And in main method, we are defining main. Main method is called as the all program execution starts from the main method. It is called as the heart of program. जो भी सी प्रोग्राम में हमें लिखिवा तो मेन मेथड होची हमारा हार्ट ऑफ द प्रोग्राम then it is a program which is used to display the integer value. So let me start this program. Void main because I'm correctly take just a minute. So int test number then it is asking you hmm, enter a number scan it
percentile D that is asking you enter a number. Suppose you are passing 45 and it is showing you the result is 45. बुझिएला? Yes, sir. अच्छा Okay. Then next I move to এটা বুঝিएला ପିଲାମାନେ ବୁଝି ପାଇଲ Yes, sir. କେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ हाँ। होची Yes, sir. आगे ଆମେ sir। ଯଦି କେଇ क्वेश्चन କିଛି ପଚାରନ ସବୁ ହଁ ହଁ ମାରୁଛ କିଏ ମତେ ପଚାରେ परसेंटाइल डी ର କାମ କଣ ମनीषा सुनील ମୁଁ ଜାଣିଛି Sir, ତୁମେ ସେଟା ଜାଣିଛ ମनीଷା display କରିବୁ. ସେ display କରିବା. हाँ एडी आसला क्वेश्चन पचारन डीटा कोन डिस्प्ले करिया पे आमे जदी कोनोसी इंटीजर वैल्यू नउचे ताको एक्सेप्ट करबा और डिस्प्ले करबा पे परसेंटाइल डी यूज करा जाय पचारिबो ना क्वेश्चन टा परसेंटाइल डी इंटीजर जेतला आमे इंटीजर वैल्यू नबा आ वेरिएबल स्टोर करबा सेति पे यूज करा जाय आ तमे एठी पचारलनी ए परसेंट ए जो एम्परसेंट मो डिफाइन करछि ता काम कोन पचारले मते बुझी गलो एटा जेते बेले आमे कोनोसी इंटीजर वैल्यू नउचे आ ताको वेरिएबल स्टोर करबा पई हेले हमको परसेंटाइल यूज करा जीवो एम्परसेंट यूज करा जीवो एम्परसेंट टेस्ट लिखिले आमे तो सी मागी देला कोन एंटर ए नंबर आमे वैल्यू देले से वैल्यू टाको से केमिति नै कि वेरिएबल स्टोर करिवो ताको स्टोर करिया पई हेले हमें ताको यूज करबा एम्परसेंट तो एम्परसेंट इज यूज्ड टू take the value from the user and store in a particular variable से वेरिएबल नै कि हमर वैल्यू टा स्टोर करिवो मो वॉइस ब्रेक होछि कि ନାଇଁ sir ନାଇଁ sir. and percentile d it is used for storing the integer value any doubt No, sir. हाँ sir। then हमें कैरेक्टर वैल्यू नबा सब क्वेश्चन पचार क्वेश्चन न पचार होबनी बुझी परिबनी और सी प्रोग्रामिंग तमर जदी डाउट रहला आगु को जो बड़ बड़ प्रोग्राम अछि कोर जावा एडवांस जावा एगुडा को सी सी प्लस एबे जमर बुझी परिबनी
तो आगो को आउ गोटे चैप्टर गले मु तुमको बहुत प्रकार क्वेश्चन देबी करि परिबोनी से गुडा क्वेश्चन जोड़ा के सब डाउट रोचे गोटे गोटे वर्ड भी आ भीतर जो माने तमे जाइनो अक्वेंटेड नो जेतबे जानु छ मते पचार देखो हाश इंक्लूड stdio.h एटा हला प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमें एमती हेडिंग लिखो एटा जेमती प्रोग्राम टाको प्रोसेसिंग करिया पे बा एग्जीक्यूट करिया पे हमें stdio.h लिखिबा तापरे हमें नंबर लिखिबा फ्लोट नंबर 1 13.5 आ गोटे डबल नंबर 2 12.4 अच्छा फ्लोट नंबर नबा पे हेले एठी देखो हमें परसेंटाइल f यूज करले आगुरु कोन यूज करले इंटीजर वैल्यू पे will take the percentile d but when you want to take the input for the floating value or float value we're using percentile f percentile lf long float okay so these are the format we're using to take or accept the decimal value clear Yes, sir. LF टा कौन सर आओ दे रहे कौन कहलो सर आओ दे से LF टा Sir, long float टा पचार कोडे कोडे long float प्रिंट LF. नंबर 1 एटा एटा आज्ञा सर हाँ एटा होची एलएफ नामे जो लॉन्ग फ्लोट माने फ्लोट रो जदी किछि अधिका नबा माने डेसिमल पॉइंट ता अधिका जदी जीवो 1 लाख 1.25 प्लस सेठी हमें डबल यूज करियो सो डबल पई डी लिखा जायनी कारण डी ता ऑलरेडी हमें नै जे इंटीजर पई सेठी पई हमें लिखा हबो परसेंटाइल एलएफ लॉन्ग फ्लोट बुझिला यस सर वीक रे गोटे दिन बाहर करके तुमको आसीबा को पड़िबो नहले जदी लैपटॉप अछि लैपटॉप रे ऑनलाइन ने जाके प्रोग्राम करिवो ए लैपटॉप नहीं वीक रे गोटे दिन आसीकी गोटे जणैबो जो दिन आसीबो से दिन हमें प्रैक्टिकल रखियो so here I use printf enter then for accepting the value
Now check here. Enter a fast number 30.5. Enter second number. The number one is 30.5, 70.8. Clear? Yes, sir. Another example. So it is, I am showing the how to display the character value. Then, sorry, how to display the integer value and float value. Then, for display the character value, char chra is used. Okay. Then for accepting the character value, percentile C is used. Suppose here I define as सर भॉइड भूल कले VO 10. Enter a number. Sorry. सर कैरेक्टर Sir, your name. Scanne percentile yes. Then ଏଠି ଆଉ ampersand ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ. ଏଠି directly value ନେଇଯିବ. Character value ପାଇଁ ampersand ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ. Name is this one. ସ୍କାନେ ପାଖରେ ଏଣ୍ଡ ହବନି। सर भॉइड ओ छाड़ देंगे ओहो,
enter your name, ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ your name is Sinha ବୁଝିଲା Yes, sir. yes sir ଆଉ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ରେ ପଢିବା सर तो सेठी परसेंटेज एस लिखा हला कैरेक्टर पे କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଁ परसेंटेज सी निया जाए किंतु जेहेतु आमे वर्ड नोचे सेति ପାଇଁ परसेंटेज एस लिखा हो बुझिला सर ସେ number परसेंटेज ନେଇଥାନ୍ତେ? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଟର ନବ परसेंटेज सी टा ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଟର ହିଁ କେବଳ ନବ ଯେହେତु ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ହେଇ ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଏସ୍ ଦିଆ ହଉଛି हां हां वर्ड ପାଇଁ परसेंटेज एस लिखा हो कैरेक्टर ପାଇଁ परसेंटेज सी लिखा हो हैला यस आज्ञा सर सर ठीक है नेक्स्ट क्लास में देखिए ओके Yes, सर sir. थैंक यू thank you sir थैंक यू सर